Hello friends, welcome to my YouTube channel AZ Education Tutorial. In this video, I have written myself class 3rd English chapter number 23, The Two Merchant or Seri. Workbook all chapter solution. If you satisfy my answer, you can stop this video and complete your workbook. Question number 1, write the answer to the following question. Next, question number 2, write whether the following statements are true or false. फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और लास्ट भी फॉल्स है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड. हाई लो, बाय सेल, पुअर रिच. क्वेश्चन नंबर 4, इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. हाई प्राइस, पुअर वुमेन, गोल्डन द ग्रीडी मर्चेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ये 4 सेंटेंस है, कंप्लीट किया है, देख लीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन. क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रैंड डॉटर सेड, ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी. क्वेश्चन नंबर 2, सो ही सेड, व्हाट इज दिस वर्थ, नॉट इवन अ चॉपर कॉइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. फर्स्ट है एवरीथिंग का नथिंग, एवर का नेवर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम द लेसन. ब्रास, टीन, गोल्ड, कॉपर. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ 3 मोर मेटल्स, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. फर्स्ट का है अनप्लेजेंट, सेकेंड का है इमीडिएटली, थर्ड का है सफिशिएंट और लास्ट है सम. नंबर 2, मेक द sentence of the your own using the following phrases. First, after a while. Second, as soon as. Question number 3, write the opposite of the following word. First, honest, honest का dishonest. Second, pleasant, unpleasant. Question number 4, add ed for each of the following. तो सब में ed लगाना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द ब्रैकेट एंड राइट देम डाउन. तो ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हुए उसको यूज़ करके आंसर लिखना है. मैंने लिखा है, देख लीजिए, लिख लीजिए. ओके. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. नंबर 1, वर्थलेस का वैल्यूएबल, सेकंड ग्रेट का स्मॉल. फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 2, होम डिड यू लाइक बेस्ट इन द स्टोरी, व्हाई. आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं. और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.